The nurse has injected the patient, which means that the patient has been injected. Clear? The driver has driven the car, which means that the car has been driven. The teacher has delivered the lecture, which means that the lecture has been delivered. No? My father has watched TV, which means that the TV has been watched. My mother has cooked food, which means that the food has been cooked. I have combed my hair, which means that the hair has been combed. I have explained the lesson, which means that the lesson has been explained. Okay, chalo. The driver wanted to drive a car and he has driven it. He has driven it. The driver wanted to drive a car and he has driven it. जी हम driver has driven the car. The driver has driven. अभी मैंने बताया. The driver has driven the car, which means that the car has been driven. Driver ने गाड़ी चला ली है जी. गाड़ी चलाई जा चुकी है जी. आगे चलो. The security guard decided to take a gun and he has taken it. Very good. The security guard now finally decided to take a gun and he has taken it. Ji. Ji. The security guard has taken the gun, which means that has taken it. the security guard has taken the gun. Convert it. Gun has been taken. क्या? The gun has been taken. पहले क्या कहा था? जाओ तो मैंने सीधे फिर दोबारा. नहीं वो A gun has been taken. The gun has been taken. जी. The gardener planned to clean a garden and he has cleaned it. The gardener planned to clean the garden and he has cleaned it. जो माली था, बागबान था, उसने फैसला किया कि आखिरकार फैसला कर लिया कि बाग को साफ किया जाए और उसने बाग साफ कर लिया. The gardener has cleaned it. क्या? The gardener हाँ. has cleaned the garden. The gardener has cleaned the garden. करते क्यों? ठीक करके सारा किस तरह ना? The gardener has cleaned the garden. बागबान ने बाग साफ कर लिया है जी. The garden has been cleaned. बाग साफ किया जा चुका है जी. The customer wanted to pay the bill and he has paid it. Very good. The customer wanted to pay the bill and he has paid it. The customer has been paid. Customer Customer has been has paid it. Paid it. Once again. The customer has paid it. फिर डर के क्यों कह रहे हैं? बोलिए भाई The बोलिए. customer has paid it. The customer has paid the bill. The customer has paid the bill. गाहक ने बिल अदा कर दिया है जी. The bill has been customer has been customer. The bill has been paid. The bill has been paid. बिल अदा किया जा चुका है. The customer has paid the bill, which means that the bill has been paid. आगे चलिए. The doctor decided. गाड़ी बारी इस वजह से तुसी पहले मैं पत्नी के बंदा जी. The doctor decided to check the patient and he has checked him. You write number 18. The doctor decided to check the patient and he has checked him. जी. The doctor has been checked the patient. जी. Doctor has checked the patient. उसे मेहरबानी करो जी. The doctor has checked. The doctor has checked the patient, which means that The patient Has been checked. ये patient क्या होता है? Patient has been checked. फिर patient, which means that the patient has been checked. जी जल्दी करें. The shopkeeper planned to give something and he has given. The shopkeeper decided to give something to the customer and he has given it. जी. The shopkeeper has given something. The shopkeeper has given something to the customer. जी. Which means that Something has been given to the customer. Which means that something has been given to the customer. आगे चलें.
मेहरबानी ना पूरा करो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੁਮ ਨਾ The army wanted to help the people and they have helped. कौन हेल्प करने जा रहे थे Army. The army wanted to help the people and They have helped. they've helped them. जी. The army has helped people. The army has helped the people, which means that The people have been helped. there is a technical mistake is there. We'll discuss later on. Not the army and they. What's that? Later on. जी. Which means that the people have been helped. जी. तो खत्म. अल्लाह सुब्हान अल्लाह. आप तो करो. तेरे को इतनी बोली ज़्यादा मतलब नहीं गांड. अपने ने तो अपने तो नहीं होता पूरा मैं तेरे से ऐसा नहीं लगा मेहरबानी. जी. हाँ जी पढ़ेंगे नंबर 1. हरियो. The parrot robber. हैं? हैं? पैरट ऊपर? पैरट ऊपर. Parrot robber terrorist. Parachute वाले. Parachuter. Parrot robber sir. कोई बंदा निकाल के लफ्ज़ समझ आ रहे हैं. तो जेड़ा लफ्ज़ My friend wanted to pick up a basket. अभी बास्केट क्या होता है? Basket. वो हासिल में नहीं. Basket sir. Basket. अच्छा. हाँ तो पूरा बता वो देख नहीं थे वो किस तरह कर रहा था. ऐसा नहीं वो नहीं आपने सारी बातें खुद करनी है. My friend wanted to pick up basket. The basket had picked it. Basket had picked it. आगे क्या है? आपने कहा my friend no want you to pick the basket. आगे. आपने लिखा है मेरे दोस्त वो बास्केट पिक करना चाहता था. फिर क्या हुआ? पहले ये तो and he has picked it. My friend wants you to pick the basket and he has picked it. Which means that the basket has been picked. ये क्या लिखा हुआ है? नहीं वो मैं कहा दिखा सकते हैं. उधर जाए मेहरबानी फरमा के बैठे. आप याद तो से भी जबर मारी. That है ना अच्छा वाला था देख के लाया था. जी. Yes. अच्छा भला देख लिया. I wanted to replace a mobile. इधर हाँ जी दसो. I wanted to replace a mobile. It can be repaired. उस बेचारे के पास जिन्हें थोड़े तो ये कल आ जाए सर की आप बस बिल्कुल सिर्फ अपने को समझ आई नहीं गई मैं तो मैं इसी को पढ़ बस खत्म ना अब ऐसा बी अटेंटिव नो बी अटेंटिव फॉरगेट अबाउट दैट फॉर्मेट नंबर 10 फॉर्मेट नंबर 10 दे दिया. What's it? My home. When I reached my home क्या मतलब है? जब मैं घर से When I reached my home आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? जब मैं घर पहुंचा. When I reached my home जब मैं अपने घर पहुंचा कदों? आज कितने गए हो घर गए हो? yes sir. कहाँ गई हुई थी और घर Tuition गया तो घर घर पहुंचेंगे वो उधर कह रहे हो मैं घर पहुंचा उधर कह रहे हो मैं घर पहुंचूंगा जब मैं मार्केट गया घर पहुंचा. कल थे आए हो कल यहाँ आए थे आए थे. यहाँ से जब गए तो कहाँ गए थे पप्पू घर गया. घर गए थे गए ना जहाँ भी गए when I reached my fraternal's aunt's home सर पप्पू का चली गई से दफ्तर हो गई. उनको खुद शुरू हो जाए मेरे को खुद ही दो चीज़ पाई हैं एक दी चमड़ी दी आई दूई लैंड दी आई जी ठीक है काले रंग का कुर्ते आ जी दुपट्टा आ जी चिट्टे रंग की सलवार है जी नीले रंग का जग्गा आ जी मैं ये दिस इज द लेसन when I reached my home you talking about your yesterday yes who was there at your home My father. my father what my mother My brother. ये My लोग थे family.
My roommate. ये आप लोग सफर करें थे ये Yes. फादर मदर एंड ब्रदर And second brother. थे ये तीन लोग थे ये लोग तीन थे मैं भी तो मैं तो सर्वेंट भी था Yes, sir. father was there Yes, sir. your mother was there Yes, sir. your brother was there Yes, sir. एक तो कह सकते हैं जी कि what was they doing ये कर चुके हैं पहले एक पहले हम पढ़ता कि my father was watching TV my mother was cooking food my brother was doing his homework ये कर चुके हैं ना जब मैं घर पहुंचा मैंने क्या देखा कि वो टीवी देख रहे थे अभी जो है वो खाना बना रही थी भाई वो होमवर्क कर रहा था Computer लगा दिया. was operating computer फॉर्मेट 10 क्या है फॉर्मेट 11 क्या है जी see this one no had B3 कहते हैं ना जी कि मैं जब घर गया तो मेरे को टीवी देख चुके थे अम्मी खाना पका चुकी थी मेरा भाई जो है वो होमवर्क कर चुका था कहते हैं ना जी Yes, sir. मेरे को तो खाना खा लिया था अम्मी ने टीवी देख लिया था भाई ने होमवर्क कर लिया था ये सिचुएशन समझ आई कि नहीं है Yes. see when I reached my home my father had watched TV मेरे को टीवी देख लिया था he had eaten food उन्होंने खाना भी खा लिया he had taken tea उन्होंने चाय भी पी ली he had received the call from his office उन्होंने ऑफिस से कॉल भी रिसीव कर ली he had replied no to his friend उन्होंने अपने दोस्त को जवाब भी दे दिया क्या समझे जी बोलिए जी बेरोज हर बंदे के बारे में तीन काम बताने हैं आपने शाबाश जल्दी करें My father was to TV. When I reach When I reach my home, क्या कहा है सर? शायद When I read the hostel आप हॉस्टल की बात है when you reach your hostel who was there my friend, your friend was there what was he doing you saw your friend there in the hostel what was he doing he had sleep. come over here what was he doing Yes. what was he doing he was sleeping ये रट्टा है इस बार आओ what was he doing He was sleeping. he was sleeping before he slept Slept. सोने से पहले what had he done guess उन्होंने क्या क्या कर लिया था सोने से पहले कोई काम करके सुतो सी ना जी He checked. he had He had checked the paper. checked the paper उन्होंने पेपर चेक कर लिए थे जी और वो क्या सोता हाँ he had eaten food उन्होंने खाना खा लिया था और He had अन्य धंधा जो बगैर वो गंदे दांत लेके सोता है या ब्रश करके सोता he had drunk. he had brushed his teeth और नमाज पढ़ के सोता बेनमाज सोता he had offered the prayer नमाज पढ़ के सो वो उन्होंने नमाज पढ़ ली थी दांत साफ कर लिए थे खाना खा लिया था ठीक है जी उन्होंने पेपर चेक कर लिए थे he had attended the lecture lecture attend कर लिया था उन्हें समझाइए वो कौन है इस हॉस्पिटल वो खाना करे कितने और गए हो कितने मार्केट में गए ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ when I reached the market जब मैं मार्केट पहुंचा the shopkeeper had opened his shop दुकानदार ने अपनी शॉप खोल ली थी दुकानदार अपनी शॉप खोल चुका था Customer had bought many things very good मुख्तलिफ ग्राहकों ने मुख्तलिफ चीजें खरीद ली थी जी shopkeeper had taken money. हाँ the shopkeeper had taken money दुकानदार पैसे ले चुका था जी बहुत से बातों से जी he had cleaned the shop उसने दुकान साफ कर ली थी he had kept the things on the shelf उसने शेल्फ पे चीजें रख दी थी he had attended many customers उसने बहुत से ग्राहक अटेंड कर लिए थे entertained many customers जी he had said many things जब आप पहुंचे आपने देखा कि आपसे पहले before you reach the market the shopkeeper had said many things
जी जी We explore the shop. आप तीन इधर हैं हाँ जी We बोलिए explore the shop. आपने अपनी बात करनी है पूरी बात करनी है When I went to my friend's home no वो क्या कर चुका था When I read the mortgage When I know before भी कह सकते हो इससे पहले कि मैं पहुंचा मेरी पहुंच में से ये है before I reach my home मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ तो मेरे पे लड़े बैठे हैं जी they had fought एक दूसरे को गाली देती बैठे हैं एक दूसरे जी when you before or when you read the mosque जी very good लोग नमाज पढ़ चुके थे तुसी मतलब लेट गए हो समझ आई ना जी when you read the mosque the people have offered the prayer जी people have ये क्या होता है the वुज़ू कर रहे थे the people had performed ablution लोग वुज़ू कर चुके थे जी अगेन had लोगों ने कुरान मजीद की तिलावत कर ली थी तो जेडी मुअज्जिन अज़ान दे चुके हैं the caller had pronounced the call मुअज्जिन अज़ान दे दी थी मुअज्जिन अज़ान दे चुका था ये टू कितने लेकिन when you read the market very good the customers had picked the wrappers उन्होंने wrappers उठा लिए थे या गिरा लिए थे उठा लिए थे क्यों उन्होंने कम wrapper लेने गया The customers had collected the money उन्होंने पैसे collect कर लिए थे कि तुम दुकान से पैसे लेने गया अच्छा The customers had said the things. had The shopkeeper had said the things. had said the thing दुकानदार ने बहुत सी चीजें say कर ली थी When I read my college, when you read your college my classroom had clean. वो और बात है वो मेरा क्लासरूम साफ किया जा चुका था वो मॉड्यूल 2 है Lecture. आप इसी बात को समझे ना पहले चबला रंगे जड़े दस हो ना the sweeper had cleaned my classroom स्वीपर ने मेरा क्लासरूम साफ कर लिया था और मैं समझे वो और चीज है तो my classroom had been cleaned वो मॉड्यूल 2 the principal had entered the principal office principal office में दाखिल हो चुका था clear नॉलेज again you can say the sweeper had cleaned the college sweeper ने कॉलेज साफ कर लिया था जी the security guard had reached the main gate security guard main gate पे पहुंच चुका था the students had reached students पहुंच चुके थे हाँ the assembly ground आगे तो कब when you reach the market The shopkeeper had closed. the very good the shopkeeper had closed the shop जब आप मार्केट पहुंचे तो वो शॉपकीपर जो था अपनी दुकान बंद कर चुका था इसका मतलब आप लेट हो गए ठीक है ना जी you went to the market to buy something but the shopkeeper had closed the shop When I reached to the monument, आपका ये टू भी ध्यान छोड़ रहा है reached the monument. वो सुन लो When I reached the monument, the I see. people had seen the Okay, face that's of okay. Raja. चलो ठीक है ये मोनूमेंट में ये मोनूमेंट पता नहीं क्या है हाँ पंजाबी हाँ नहीं कुछ दसो When I read the my school. ये when I read the my school क्या है When I read my school. when you read your school जी who was there Who was there? My teacher. your teacher was there what had he done he had attended the lecture he had started the lecture वो lecture start कर चुके थे teacher mean you were late क्या आप late थे जी आगे When I reached the school, the examiners had checked the paper. very good
आप जब स्कूल पहुंचे आपने क्या देखा कि एग्जामिनर पेपर चेक कर चुके थे। The student had attended the lecture. वेरी गुड, स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर चुके थे। अब आपने 20 जुमले बना के लाने इस तरह, ये पढ़ चुके हैं, रीच, came to, went to, came out from, met, when I met my friend, जब अपने दोस्त से मिला तो मेरा दोस्त भी के दूर खिलाई बैठा, he had fought with some other friend, some other people, वो कुछ दूसरे लोगों के साथ वो लड़ चुका था, he had taken a bath, वो गुस्ल कर चुका था, he had brushed his teeth, उसने अपने दांत साफ कर लिए थे, clear? He had, you can say he, उसे क्या कहते हैं, he had misplaced his mobile, अपना मोबाइल कहीं भूल चुका था। ये reached, enter, went to, came out from, went out from, clear, met, called, लिख के आगे फिर 20 जुमले बनाने हैं आप ना लेंगे जी। स्कूल पहुंचे जी, प्रिंसिपल है कितनी बैठा, सिक्योरिटी गार्ड है कितनी बैठा, स्टूडेंट्स है कितनी बैठे हैं, ठीक है जी। अच्छा मैं मार्केट गया जी, भिखारी है कितनी बैठा, शॉपकीपर है कितनी बैठा, वो दे गया जी, मेरी नानी है जी, मेरी नानी तो सिर फाड़ी बैठी है जी, उनका समझाई नहीं, नानी से नहीं लोग। थैंक यू वेरी मच, सी टुमारो इंशाल्लाह। सर जी एक्सेप्ट सब